So let the PowerPoint begin. So we had discussed about central tendency, that there are three measures of central tendency. Okay, so I'm sorry. There are three measures of central tendency: mean, median, and mode. So of these three measures of central tendency, mean we have already done, and now today we shall do median and mode. So that's also very simple. Just as mean is very simple, median is also very simple. So we are going to start median now. Okay, so median. So median is that measure of central tendency that divides any given distribution into equal parts. So this is very important. किसी भी डेटा को, किसी भी वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, उसे ही हम मध्यांक कहते हैं. मध्यांक मतलब मध्य का अंक. ओके, जिसके नीचे 50% अंक आए और जिसके ऊपर 50% अंक आए. तो मीडियन इज दैट पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एनी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल पार्ट्स, and it is also a measure of central tendency. Okay, however it is used where we have ranked data. जहाँ पे ranked data होता है वहाँ पे हम median का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो आई थिंक हम लोग आगे बहुत. मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ आपके साथ कि मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है, दैट इज n प्लस 1th टर्म बाय 2. ठीक है, n प्लस एकवां पद डिवाइडेड बाय 2. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट अ रॉ डिस्ट्रीब्यूशन and arrange, if you arrange the values in ascending order, यदि आप आरोही क्रम में इन मापों को अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे. और मीडियन है n प्लस 1 बाय 2th टर्म. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका पहला टर्म है. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म और सातवां टर्म. टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 7. So the value of n is what? N is equal to 7. Okay, so 7 plus 1 by 2. So 7 plus 1 is what? 8. 8 by 2 is what? 4. So that is, it talks about median is what? Median is the fourth term. So median is the fourth term. So what is the fourth term? If you see here, what's happened here? 90. Yes, 1, 2, 3, 4. So since median comes out to be 4, how did it come out to be 4? 7 plus 1. So 7 plus 1 divided by 2. So that comes out to be 8. That is 8 divided by 2. So that is 4. So not 4, but fourth term. So fourth term कौन सा आएगा? 1, 2, 3, and this is the fourth term. So median is what? Median is 90. Okay. और आप अगर देखें भी तो 90 के नीचे 3 है और 90 के ऊपर 3 है. तो इस नाते ये बिल्कुल क्लियर है कि 90 is the midpoint of the distribution. It is that point below which 50% cases lie and above which 50% cases lie. So that is about your, this is one example with raw distribution. Okay, so now let us move to the next one. This is what it says, fourth term, so it is 90. Okay, now find the median of the values. These are the values that are given, and you can see these are not arranged in either increasing or decreasing order. So what have you to do? You have to first arrange these scores in increasing order. इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है.
ठीक है। तो जब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर दिया तो ये वैल्यूज आ गई। अब जरा काउंट कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे आपके टोटल 12 स्कोर्स हैं, जिसमें 10 इज द फर्स्ट and 45th is the 12th score. So what do we do? Median is n plus 1 by 2th term. Okay, so median is total number of scores are 12 plus 1 by 2th term. So that means 13 by 2th term. That means 13 by 2 is what? 13 by 2 is 6.5. So it is 6.5th term. So let us see where this 6 plus 6.5th term lies. This is the first term to start with. Second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Okay. So you can see here there are two scores. 25 is repeated twice. 25 and 25. Okay. So this is the fifth term and this is the sixth term. Then 7, 8, 9. No. Just a minute. Yes, of course. This is the sixth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is the seventh term. Then 8, 9, 10, 11, 12. Okay. तो इन्हीं दोनों के बीच में, तो दोनों तो सेम ही है, तो आप देखिए इसमें कैसे होगा। 25 plus 25 by 2. So 25 by 25 when you do, what is it? 50 by 2. So that comes out to be 25. So median for this given distribution is what? Median for this given distribution is nothing but it is 25. Okay. Now some of you might be having confusion regarding odd and even series. Okay. कि odd series में ये होता है, even series में एक जगह n+1 होता है, एक जगह n होता है। ये सब बेकार बातें हैं, किसी चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीडियन का सीधा सा फॉर्मूला है n+1/2 n+1/2th टर्म, और उससे आप स्कोर्स की रैंकिंग कर लीजिए, उसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करके जो भी स्कोर 6.5 पोजीशन पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। सो दैट मीन्स मीडियन जो टर्म जो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, दैट गिव्स अस द पोजीशन या रैंक। जैसे यहाँ पे मीडियन कौन सा है? मीडियन इज द 6.5th टर्म। So with median you come to know about the exact position of any given score, and this is very important for objective type also. Like a question may be asked as to what is the measure of central tendency which gives us position. Okay, so here the answer is median. So let us proceed. This is about the simple frequency distribution. The process is the same, that I'm not going to do it. Okay, I'll now straight away come to the frequency distribution. Okay, so the formula to calculate median in case of frequency distribution is L plus n by 2 minus C divided by F into I. So now let us first understand the terms that are here in this formula. If you are sitting with a notebook, you must sit in a class with a notebook. Just write down this formula. Okay, L plus n by 2 minus C divided by F into I. Okay, where L is what? L is the exact lower boundary of the median class. जो भी मध्यांक वर्ग है उसकी जो वास्तविक निम्न सीमा है, मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा L कहलाती है. Okay, so L is what? Lower limit. Okay, so L is what? Exact lower limit or boundary of the median class. N, N is the total frequency. C is cumulative frequency below L. L के नीचे की संचयी आवृत्ति, L के नीचे की संचयी आवृत्ति, cumulative frequency below L. And what is L? L is the exact lower limit of the median class. Okay, now frequency या F क्या है? F is the frequency of the median class, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति. तो C और F को की अगर आप तुलना करें, so you will find C is cumulative frequency below the median class. Below L का मतलब क्या हुआ? L is the exact lower limit of the median class. तो below L का मतलब है below the median class. Okay, and F is what?
F is the frequency of the median class. तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति क्या है, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ओके, एंड this is not L, this is I. I is the range of the median class. That means the, in simple terms, you can say I is the class interval. What is I? I is varg antaral. Okay? So let us see an example where you can understand it well. Okay. Now we have this frequency distribution, as you can see. What is the lowest? What is the lowest one here? Which is the smallest class here? It is this one, 40 to 59. Okay. And what is the highest class here? 120 to 139. Here you see again, what is I? I means what is this thing, class interval. So class interval, if you see, it is 20. Okay, here also class interval is 20. So in this frequency distribution, class interval is how much? It is 20, that you can see in each class. I hope you have no problem up to here. I hope you are understanding things. Okay, so if you have any problem, if my pace is fast, just unmute yourself and let me know about it. Okay, so just be careful, cautious, and any difficulty that you face, you just let me know about it. Okay, so ये आप देख लीजिए कि ये सबसे छोटी क्लास है and this is the highest class. And how many classes are there in this distribution? 1, 2, 3, 4, 5. There are just 5 classes, yes, and the lowest score is 40 and the highest score is 139. So when you look at this table, these are some basic information that you can gather. Okay, how many scores are there in 40 to 59? 50 scores. 60 to 79, 250 scores. 80 to 99, 500 scores. 100 to 109, 150, and 120 to 139, there are 50 scores. So total number of scores in any given class is the frequency of that particular class. किसी भी कक्षा में अंकों की कुल संख्या को उस कक्षा या वर्ग की आवृत्ति कहा जाता है. ठीक है, किसी भी कक्षा या वर्ग में अंकों की कुल संख्या को उस कक्षा या वर्ग की आवृत्ति कहा जाता है. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर. तो अब आप अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इसमें से आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं. यू कैन ड्रॉ सम इन्फरेंसेस फ्रॉम दिस. यू सी, as we move from one extreme to the center, number of scores in any given class increases. I repeat, जब हम सबसे नीचे वाली कक्षा से मध्य की तरफ बढ़ते हैं तो किसी भी कक्षा में पाए जाने वाले अंकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है. At the same time, when once again we move from the center towards the other extreme, the total number of scores in any given class again decreases. Okay, so this is a very, very important characteristic of all the variables that exist in nature, especially the psychological variables, the sociological variables, the educational variables, and even the physical variables. आप अगर अपनी कक्षा में देखें तो ऐसी लड़कियां जिनकी हाइट एवरेज है उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, जबकि जैसे जैसे आप दोनों एक्सट्रीम्स में बढ़ते हैं, मतलब बहुत टॉल गर्ल्स और बहुत शॉर्ट गर्ल्स की तरफ, उनकी संख्या घटती चली जाती है. So that means that towards the center, the scores distribute themselves in such a way that towards the center, maximum number of scores lie. All right. So when we talk of center of any given distribution, so our the three measures of central tendency, their nature should be such that they should lie somewhere in the center.
So I think these are some basic information that you can know just by looking at this particular table. So let us proceed to the next table. Okay, it is the same distribution. Now we are going to calculate certain things. Okay, now here we have calculated the class boundary. Now when we have calculated the class boundary here, what have we taken into account? The exact limit of each class. ओके जब हमने यहाँ पे वर्ग की बाउंड्री निकाली है या वर्ग की सीमा निकाली है, तो यहाँ पे हमने जो वास्तविक निम्न सीमा है और वास्तविक उच्च सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास बाउंड्री निकाली है। और ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मीडियन के कैलकुलेशन में, प्लीज म्यूट योरसेल्फ हूएवर इट इज, क्योंकि मीडियन के कैलकुलेशन में व्हाट डू वी नीड? We need the exact lower limit of the median class. Okay, so इसके लिए we need to calculate the exact limits of each class. All right, girls, somebody has unmuted herself, which is causing disturbance. You are requested to please mute yourself. Yes, thank you. So if you see this particular class 40 to 59, and if you talk about the exact lower limit of this particular class, it is 40 means what? As we discussed mobile, as we discussed I mean previously we have discussed this, that any score is not a point, rather it is an interval, that lies 0.5 below to 0.5 above. So here 40 is a score, 40 is a point, and what is the exact limit of 40? The exact limit of 40 is 39.5 to 40.5. Okay, so 40 is the midpoint of 39.5 and 40.5. Similarly, if we talk about 59, 59 is that is also a score. So it is not a point, rather it is an interval that varies between 58.5 to 59.5. So if we see this particular class, that is 42, if we see this particular class that is 40 to 59, it is basically 39.5 to 59.5. क्या किया मैंने इसमें? 40 की निम्न सीमा को ले लिया, तो 40 की निम्न सीमा क्या है? 39.5, और 59 की उच्च सीमा को ले लिया, and what is the उच्च सीमा of 59? That is 59.5. So that ways we have written the boundary of the class as 39.5 to 59.5. Similarly, here it is, if you can say 0.5 नीचे से 0.5 ऊपर. So this is 59.5 to 79.5, 79.5 to 99.5, then 99.5 to 199.5, then 199.5 to 139.5. So that is how we have calculated the class boundary. Another thing that we have done here is we have calculated the cumulative frequency. Okay, so how do we calculate the cumulative frequency? See, what do we do in calculation of cumulative frequency? ये भी आपको बताया था कि संचयी आवृत्ति की जो गणना करते हैं, संचयी आवृत्ति की गणना हम हमेशा सबसे छोटी क्लास से सबसे बड़े क्लास की तरफ करते हैं. तो यानी व्हाट इज द टाइम? सबसे छोटी क्लास से सबसे बड़ी क्लास की तरफ करते हैं. सो दैट मीन्स इट इज लाइक व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्लास? 40 to 59. सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? 50. सो आई एम सॉरी, द फ्रीक्वेंसी इज 50. So cumulative frequency will also be 50. लेकिन इससे ऊपर की क्लासेस में क्या हो रहा है? ऊपर की क्लासेस में हम ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? संचय करना, इकट्ठा करना. तो मान लेते हैं सबसे छोटी कक्षा में 50 स्कोर्स हैं, लेकिन अगर उसके बड़ी वाली कक्षा में हम जाएं तो कितने स्कोर्स हैं? टोटल कितने स्कोर्स हैं? उसके पहली वाली कक्षा के 50 और उस कक्षा के 250.
तो सबको जोड़कर कितनी कक्षाएं, कितने स्कोर्स हो गए? सबको जोड़कर आपके पास हो गए 300 स्कोर्स. सो दैट यू कैन सी 300 स्कोर्स. देन अगर उसके पहले वाली कक्षा में जाएं तो फिर ऐड कर लीजिए 300 प्लस 500, so that is 800, then 800 plus 150, that is 950, and 950 plus 50, that is 1000. So in this way cumulative frequency is calculated, and if you have calculated correctly you will find that the highest cumulative frequency will be always equal to n. Highest cumulative frequency will be always equal to n. So if we see in this picture, this is 1000, this is the highest cumulative frequency, and this is n. So you can see here very clearly that both are same. Okay. Another point of caution that you have to take here is cumulative frequency is always calculated from the smallest to the largest class. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना हमेशा सबसे छोटे से सबसे बड़ी क्लास की ओर किया जाता है. तो हम क्योंकि हम संचय करते हैं हमेशा कम से ज्यादा. छोटे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, सागर से तो बूंद नहीं भरती है. तो इसीलिए हमें क्या करना है, छोटे वाली कक्षा से शुरू करना है और जोड़ते चले जाना है हर कक्षा की फ्रीक्वेंसी को, और उस तरीके से हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो that is how cumulative frequency is calculated. Another important thing that remains here is to calculate the median class, क्योंकि we have to consider cumulative frequency, and we have to consider frequency of one is of the median class and one is below the median class. तो उसके लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि median class है कौन सा. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, I am talking about something very important. How to calculate median class. Okay, now you see here the value of n is what? 1000. So how do you calculate median class? Median class is calculated by the formula n divided by 2. Okay, so n is what? 1000 divided by 2 is what? And 1000 by 2 is equal to 500. 500. Yes, so that is step number 1. Now we move to step number 2. Now in the cumulative frequency column, संचयी आवृत्ति के कॉलम में आप देखिए कि 500 कौन से कॉलम में, कौन से सेल में आएगा. ओके, इन द cumulative frequency column, see where 500 will lie. So see, up to here 50, then here 300. That means up to here 300 scores are there, and then up to here 800 scores are there. So definitely 500 will lie somewhere in this cell. Is this point clear? Is this point clear? Yes. 500 will lie somewhere in this particular cell. Okay, क्योंकि इसके नीचे तक कितने हैं? 300. तो 500 300 तक तो नहीं है, 300 से ज्यादा है, और इसके ऊपर कौन सा है? 800. यानी 500 जो है वो कहीं ना कहीं इसमें लाई करेगा. ओके, so this class becomes the median class. This is what? This is the median class. Okay, this is the median class. So understood how to identify median class? Let us do it now and then we'll end the class. I think it is time. How to identify the median class? It is very easy. First step, do n by 2. So n by 2 is what? 1000 by 2. That comes out to be 500. Okay. Now what do? 500 you see in cumulative frequency column. I repeat, see in cumulative frequency column, not in frequency column. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखिए, गलती से भी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मत देखिएगा. तो जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिखता है कि 800 है, तो यहाँ उसके नीचे में 300 और वहां पे 800, यानी 500 जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसी वाले कक्षा में लाई करेगी. इट विल लाई समवेयर हियर. So that means 80 to 89 becomes your 500. That becomes your median class. Okay, so we'll just move to the next slide and see what it is, and we shall end here. Stop share. Okay, so I think just 1 or 2 minutes I'll take.
Okay, so this is it. Okay, Shalini, you can unmute yourself and ask if you have any problem, dear. If you have any problem, you can ask. No problem, Yes? नो प्रॉब्लम मैम, वो तो आपका मिस्टेक से हो गया। अच्छा, मिस्टेक से हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, okay, I think it is time and we shall stop here. You try to solve this problem by yourself at home. Since now you know the values, so we shall continue with the class tomorrow. And just because you have the formula, and you know now, because since now you have calculated median class, so you know how to calculate it. All those who have understood up till here, do one thing, calculate the value and keep it with you. Tomorrow in our class, we shall discuss it. And then mode is very simple. We'll just finish it in 5-10 minutes. And I shall tomorrow move to the next measure, that is measures of dispersion. So that is all for today. If you have any doubt, you can give it to me on my WhatsApp number. Okay, so that's all. Thank you so much for joining. And now I am ending the class. Okay, so bye for now. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.